Today we are going to learn about. No, first you say welcome to Grihaldan Vlogs. Welcome to Grihalden Vlogs. Please like and subscribe. Thank you for watching this video. Okay, so what we are going to do today? Today we are going to talk about the 7 habits of highly effective teens. Why we are talking it? Because it's habits. Because it's habits development. It's habits. Exercise. It's habits development exercise. गुड 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 जी दोस्तों, तो जैसे कि मेरे बच्चे ने आपको वेलकम कर दिया गृहल्दन व्लॉग्स में। एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा कि जब समर वेकेशंस या विंटर वेकेशंस होते हैं स्कूलों में, तो बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस विंटर कैंप्स लगाते हैं। उन विंटर कैंप्स में क्या होता है कि वो बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते हैं, उनको सॉफ्ट स्किल्स सिखाते हैं, और जो चीज़ें स्कूल में या घर पे मिसिंग कंपोनेंट्स होते हैं उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस के, उनको किसी तरीके से मेकअप या फिल इन करने की कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि आप में से जो भी लोग जो पेरेंट्स हैं या जिनके घरों में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो आप भी इस चैलेंज को फेस कर रहे होंगे कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि घर में बच्चे ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के साथ, स्क्रीन्स के साथ अपनी टाइम गुजारते हैं। उसमें बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पेरेंटल मॉनिटरिंग उसमें नहीं होती या कम होती है, जिसकी वजह से वो बहुत सारा टाइम उनका अननोइंगली अनप्रोडक्टिव गुजर जाता है। लेकिन मैंने अपने बच्चों के साथ इस साल एक मज़ेदार एक्टिविटी ये शुरू कर दी है कि हमने टेक्नोलॉजी को किताबों के साथ एक तरह से इनकारपोरेट करके उन दोनों की मदद से जो है लाइफ स्किल्स, छोटे मोटे स्किल्स हम सीखते हैं, और छोटे मोटे जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने जो पहली किताब जो हमने टेक्नोलॉजी के ज़रिए या अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ज़रिए अपने बच्चों से रोशनास करवाई, वो आप सबको पता है, स्टीफन कोवे की जो मशहूर ज़माना किताब है। क्योंकि हम हैबिट मेकिंग के मरहले में हैं इस वक्त, हमारे बच्चे अपने आदत एतवार डेवलप कर रहे हैं, तो इस तरह के टेक्स्ट से इनको अर्ली एज में उनका एक्सपोजर अच्छा रहता है। तो मैंने फिर ये किताब इसलिए मैंने सेलेक्ट किया कि ये किताब मैंने खुद जाके कब पढ़ी थी, मैं जब यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में था, तो उस वक्त मैंने ये किताब पढ़ी थी, और इस किताब का मेरी ज़िंदगी पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस किताब का जो एक्सपोजर है वो अपने बच्चों को अर्ली स्टेज में ही दिला दूं, ताकि उनको उसका थोड़ा सा नो हाउ हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि पूरी किताब पढ़ ले, लेकिन उसके जो बेसिक थीम्स हैं या उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो उनको पता चले। तो इस तरह फिर आप सबको पता है कि क्योंकि वो जो हाईली इफ़ेक्टिव पीपल के अंदर जो टेक्स्ट है वो ज़्यादातर एडल्ट्स या बड़े जो लोग हैं उनके लिए लिखी गई है, तो थोड़ा सा बोरिंग भी होता है। लेकिन तो बच्चों के लिए जो सियान कॉवी ने जो किताब लिखी है हाईली इफेक्टिव टीन्स के नाम से, तो हमने उस किताब को सिलेक्ट किया है और उस पर हम आज बात करेंगे। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी इस एक्टिविटी से थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेके या इस तरह की एक्टिविटी अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ, अपने मोहल्लों में कर सकते हैं। उससे आपकी अपनी लर्निंग भी बेहतर हो जाएगी और आपके बच्चों की भी लर्निंग बेहतर हो जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी एक्टिविटी। तो जी तथा इमाद, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद यू। तो हमने लास्ट मंथ, 1-2 मंथ में कितनी किताबें हमने देखी है जो कंप्यूटर पे? 3-4 किताबें देखी। उसमें ज्यादातर हमने पहली किताब कौन सी देखी थी? हाईली इफेक्टिव टीन्स। हाईली इफेक्टिव टीन्स, ये किसने लिखा है? शान कवी। शान कवी ने। और उसका एग्जैक्ट टाइटल क्या है? 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स है। और उसके बाबा का क्या नाम था, उसके जो वालिद साहब का? स्टीवन कवी। स्टीवन कवी, ग्रेट। तो इस किताब से आपको कुछ फायदा मिला जो पढ़ने के बाद? डिड यू लर्न समथिंग? यस। फॉर एग्जांपल, हैबिट्स ऑन हाउ टू बी अ बेटर टीन। इट हेल्प्स यू टू हाउ टू बी ए बेटर टीन। ओके, सो इसमें क्या 7 हैबिट्स जो है वो याद है आपको?
अच्छा, पहला पहला हैबिट क्या था? Be proactive. Be proactive. Okay. Asnath, can you talk about some of these habits? What were they? Take it, take it. There's two types of circles, and the first is the circle which like ticks you off, but you can't change it, like if the weather is bad or something else. And the second one is the circle that you can change, like for example your diet or something. So if you have a basic work routine every day, and for example you run for 1 hour every day, but one day it's for example raining outside, so you're like, oh my god, I can't do this today. But like you shouldn't think that. You should like focus on what you can influence, what you can change. But you may not be able to change the weather, but if you stick to your planning exercise, you will see serious results. That's why you should not stop, and you should still run even if it's raining. Yeah. Great. So these two circles are circle of influence and circle of concern. क्या था? Circle of influence and circle of concern. Circle of influence and circle of concern. Yeah, I was really impressed when I was starting this topic. You said two things. What was the book about? Can you say that it again? Private victory is better than public victory. What it is about? For example, last night I fight with my brother. The next day I didn't want to go to school and I didn't want to apologize with my brother. Okay. But since I wanted to have private victory, I apologized to my brothers and then I went to school. Great. That is really good, man. Private victory. That means इंसान को जो है if I say it in Urdu, इंसान को जब दुनिया चेंज करने क्या सोचता है ना, आप when you are thinking about to change something in your life, आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ कैसा बिहेव करें या दुनिया कैसी होनी चाहिए, तो स्टार्ट विथ योर सेल्फ. ओके, तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारी लाइफ में वी स्टार्ट blaming others for our failures, or when we are successful we love to take the credit that we did it, but when we are failing in something, then we start blaming others. Oh, I failed because of this man or that man or this woman or that woman, or so we blame external forces. Okay, so we should learn first to Be proactive, not reactive. yeah, that is true, but self control first and then influence others with your positive attitude. That is the great thing. And the first habit, that is also called the habit of choice. What is that called? The habit of choice. The habit of choice. और इसको ये भी कहते हैं ना कि जैसे इहान ने कहा पब्लिक विक्ट्री और प्राइवेट विक्ट्री, आप चॉइसेस अपने जो भी बनाते हो उसके बाद आप पहले अपने आप पे ऊपर अपने नफ्स के ऊपर विक्ट्री हासिल करते हो, देन यू स्टार्ट चेंजिंग अदर थिंग्स. ग्रेट. सो हु विल टॉक अबाउट द सेकंड हैबिट? व्हाट वाज इट? Begin with the end. Begin with the end. Begin with the end In mind. in mind. What that means? Can you tell? Talk. I'm helping. It means don't think about the past, like your past failures, or just think of what is yet to come. Okay. Begin with the end in mind. Beginning with the end in mind, it means like you should have a plan, or you don't have to go spontaneously. Beginning with the end in mind also means like you need to have a future set in mind, or you'll be just like doing stuff with no meaning. For example, if you want to be a doctor in the future, then you have to focus on sciences and not on the other subjects like Okay. geography. Okay. So it's also called the habit of vision. First habit was habit of choice. Second habit is habit of vision. Okay. So begin with the end in mind का मतलब ये है कि आप कोई भी काम शुरू करते हो तो उसका एंड क्या होगा, मतलब क्यों कर रहे हो ये काम, मतलब फायदा या नुकसान, इसमें आप नहीं जाते हुए जब when you finish that work what will be the end product. तो आपको हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर रख के
काम करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ लाइफ के सीरियस मामलात में ही ऐसा सोचो, छोटे छोटे मामलात में भी। आप जैसे किसी क्लब में खेलने जा रहे हो, या आप स्विमिंग करने जा रहे हो, या आप छोटी मोटी चीज़ अपनी लाइफ में, आपको बाहर निकलना है अभी थोड़ी देर के लिए, वॉक करके आना है, तो वॉक करके आना है, तो you must think about it, why I'm going for the walk, because it has some benefits for your physical health as well, है ना। तो आप वॉक करोगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, आप मेंटली आप पॉजिटिव हो जाओगे, आपका बॉडी एक्सर्जन होगी, बॉडी एक्सरसाइज होगी एक तरह से, तो इट हेल्प्स यू ग्रो, ठीक है ना। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें से लेके बड़ी चीजों तक आप कर सकते हैं। सो इहान, व्हाट वाज द थर्ड हैबिट, डू यू नो? Put first things first. व्हाट? Put first things first. ओके, सो इस हैबिट को हैबिट ऑफ इंटेग्रिटी एंड एग्जीक्यूशन भी कहते हैं। सो इंटेग्रिटी मींस व्हाट यू से यू डू, व्हाट यू प्रॉमिस यू अकम्प्लिश। इंटेग्रिटी का मतलब ये होता है कि आप कोई बात करते हो या कोई एम बनाते हो, तो आप इंटेग्रिटी के साथ उस चीज को अचीव करते हो। यू डोंट ब्लफ, ओके। कोई भी बात करके लेकिन पीछे से चीटिंग करना, झूठ बोलना, ये चीजें इंटेग्रिटी में नहीं आती हैं, ठीक है। इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि आपने मुझे कहा ना कि पापा मैं जो है कल 5 बजे मतलब फलां जगह में जाके फलां काम करूंगा, या मुझे ये करना है, या मैं आपके साथ ये प्रॉमिस करता हूँ, या जो मे बी, it's not about only you, it's about me as well. So if I say something to you, I should be doing it, you know। सिर्फ बातें करके भूल जाना या उसको ट्रिक करना, ये चीजें इंटेग्रिटी में नहीं आती हैं, ठीक है। Okay, and then habit 4, what was it? Think win-win. What that means? Like, don't think of negative thoughts. Think about positive thoughts. Great. Think win-win is like that when you are working, Don't think about losing, but think about winning. winning and also helping others to win with you, you know. So for example, if you are having a competition with me, and then you should be very careful about that. If you win, we also win, okay. Okay. We both should be happy. Making someone unhappy for your own winning is not good, है ना। ऐसा है ना तथा। तो थिंक विन विन में का से आप क्या समझते हो? There are 4 types of winning. There's win and lose where you win but the other guy loses, or there's lose win where the other guy wins and you lose, and there's lose lose where both of you lose. And then there's habit 4, that's win win. So that's basically when you and your partner, they both win, and that's the best kind of benefits, because both of you get benefits and no one has to be like feel left Yeah. out or something. या बिल्कुल अच्छा। इसका मतलब ये होता है कि आप अच्छे बनो, और जब आप कोई चीज अपने लिए अच्छा समझते हो तो वो दूसरों के लिए भी आप कोशिश ये करो कि उनको भी उसका बेनिफिट पहुंचे। देखो, दूसरों को अनहैप्पी करके, दूसरों का हक मार के अपने आप को हैप्पी करना अच्छी बात नहीं है। इसमें जो है ना हमारे उसमें जो रिलीजियस ट्रेडिशंस होते हैं या एजुकेशन होती है, उसमें भी ये कहते हैं कि आप इंसान जो है हुकूकुल इबाद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद में ये है कि आप अपने आसपास रहने वाले लोगों का भी ख्याल रखते हैं, ठीक है। आपके नेबर्स हो गए, आपके दोस्त हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके, तो आप सबको आपसे बेनिफिट होता है, ठीक है। आप ये कभी नहीं करो कि भाई मुझे सारा बेनिफिट मिलना चाहिए लेकिन दूसरों को नहीं मिलना चाहिए। दैट इज अ बैड अंडरस्टैंडिंग ऑफ विनिंग, यू नो। तो जब आप विन करते हो, कोई भी चीज विन करते हो, तो आपके दोस्त, आपके सराउंडिंग में रहने वाले सारे लोगों को उसका फायदा होना चाहिए, हैं, ठीक है ना। ओके, सो कितने हैबिट्स हो गए? 4. व्हाट वाज इट? Understand to be understood. what that means? Seek first What? to understand, then to be understood. No, seek first to understand, then to be understood. That means mutual understanding, you know. For example, there's one time that your all your body organs and your body is in a conversation, but your brain is like in the sky or something. Okay, आप इसको बात करो ना दादा।
Think first then to be understood is basically when you understand and then you make others understand. Okay. So seek first to understand, then to be understood is when you have to understand other people before expecting them to understand you. How can someone else understand you if you don't understand them? This is the basic conversation. You have to be attentive when someone's talking to you. You have to listen to every word, and focus on it. You have to focus on every word they understand, and once you understand them, then you can talk about yourself. Okay, great. What is the sixth habit? Synergize. Synergy. What do you understand by synergy? Cooperating with each other. Cooperating with each other. सिनर्जाइज जो मुझे समझ आती है ना, सिनर्जाइज में ये है कि आपके जो फर्स्ट 5 हैबिट्स है ना, उनका एक कलेक्टिव आउटकम है ये, ठीक है ना। आप पार्ट्स में चीज़ें करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, या आप हैप्पी नहीं हो सकते हो। आपको अगर हैप्पी और सक्सेसफुल रहना है तो आपको ये जो छोटी छोटी आदतें हैं, छोटी छोटी आदतें, इन सबको एक साथ लेके चलना है, ठीक है। सिनर्जी, सिनर्जी इसको कहते हैं। सिनर्जी में जो है, आप फॉर एग्जांपल आप कोई काम करने जाते हो तो आपके पास उसके टूल्स भी होने चाहिए, आपके पास टाइम मैनेजमेंट भी होनी चाहिए कि किस वक्त करना है, क्या करना है। आपके पास सही टाइप के रिसोर्सेज होने चाहिए, और आपके पास वो एटीट्यूड भी होना चाहिए जिसमें बर्दाश्त है, पेशेंस है, जिसमें जो है पॉजिटिव रहना है, जिसमें दूसरों से हेल्प लेना, दूसरों की हेल्प करना, कलेक्टिव एफर्ट्स, ये सारी चीज़ें मिलके, ये सारी जो आदतें हैं ना आपकी। अब जैसे फर्स्ट हैबिट में आपने क्या पढ़ा था उसमें कि बी प्रोएक्टिव में? Habit 7 is sharpen the saw. For example, you have a neighbor which is next to you. Both of your gardens have a tree blocking the sunlight. Okay. So then you and your neighbor decide to cut it on like July 17th. And then when it's July, they your neighbor thinks, I'll wake up more early, so then I'll cut my tree down first and then watch him cut down his tree. And then he wakes up very very early, but he forgets to sharpen his saw. But the other neighbor wakes up like I don't know, 10 minutes after him, and then he sharpened the saw. Then the other neighbor took like 3 hours to cut down his tree, while the other neighbor only took like 5 minutes to cut down the tree because he sharpened the saw, but the other neighbor didn't. Great, man, इसको याद है यार। I'm really happy with it Tata, you remember the whole story। अच्छा जी, तो इसने सारा कुछ बोल दिया यार, अब क्या बोलोगे आप? sharpen the saw, can you say something else? So basically, what he means is that when you have a task, you should prepare for the task rather than just going in head first. You should prepare, like he said. Your neighbor is cutting the saw with a cutting the tree with a dull saw, and it's gonna take a long time. But if you just sharpen the saw, it will take way shorter time than when your neighbor does it, even if he starts earlier. Okay. Anything else? You should take time to cool off and just don't do it all day. Then you'll have burnout and you won't see the results that you want to. So if you take time to sharpen the saw, then you'll have better results and faster results. Okay, great. Do you know there is another habit? Huh? Who has written that book? Stephen Covey. So yes, Stephen Covey has other books as well. So someday we will also look at those books. But right now we just completed. We just covered the whole concepts, the main ideas of these 7 habits. So, but when you go into the details of these habits in that book, you will enjoy it a lot, because there are many examples, many concepts, and many real life experiences are there. So when you read it in detail, you will really enjoy it.
फॉर एग्जांपल इसमें जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के जो कहानियां हैं या सर्कल ऑफ कंसर्न की जो कहानियां हैं या उसमें फर्स्ट 3 हैबिट्स जो है वो आपकी प्राइवेट विक्ट्री से रिलेटेड है, लास्ट 3 हैबिट्स जो है वो आपके पब्लिक विक्ट्री से रिलेटेड है। तो इस तरह इस बुक में बहुत मज़ेदार चीज़ है। उसके अलावा हमने एक और किताब पढ़ी थी, उसका क्या नाम था किताब? है मैजिक फिंगर। व्हाट वाज दैट अबाउट? It was like some people, one boy had a finger that can like change people. So one day, like every day, his neighbors would come to kill some birds. So then one day, he used his magic finger, and then the birds became the men, and the men and those people became the birds. And then like the birds, the humans which turned into birds made a nest, and then the next day, like those birds which were adult, which turned into men, they took their guns and went outside. They wanted to kill those birds, but then the men transformed back into men, and then the ducks transformed back into birds. वाह, ग्रेट, जबरदस्त यार। देखो इसको वो भी याद है। ये कौन सी किताब थी? Yeah, The Magic Finger by Roald Dahl. कौन सी किताब थी ये बताओ अभी। The Magic Finger by Roald Dahl. रोल्ड डाल की किताब थी ना, ये नॉवल था ना? नॉवल था या शॉर्ट स्टोरी था कुछ था? Short story था. शॉर्ट स्टोरी था। इसको याद है पूरा, देखो उसमें क्या था यार बताओ। Usme basically there was this guy named Mr. Peter. He had 2 sons, he had 2 children, and every day they would take their shotguns and hunt down birds. And their sons had this friend, this girl, who didn't like when they hunt down birds. So she told them to stop, but they made fun of her. They said, "We're never gonna stop. We're gonna keep hunting down her birds." And then she got so angry. She used her magic finger, and the magic finger basically changes the story so the bad people can learn a lesson. So basically it turned Mr. Peter and his children and his wife into birds and turned the birds into them. So basically next day they woke up really tiny. They walked out of the house. The birds came in. They started like messing with the house. And then they decided to we should adapt to the wild, and then they started living in the wild. After a couple of days, the birds came out with a shotgun to shoot them down, but they were like, "Oh no, you can't do this." But the birds were like, "You did this to us, so why can't we do it to you?" And then Mr. Peter said, "We will never do it again if you let us go." Then the birds let them go, and the magic finger turned them back to normal. In the end, I think Mr. Peter changed his name to Mr. Pigeon to Mr. Bird to say that he cares about birds, and even his name is named after the bird. ग्रेट ग्रेट। तो ज़बरदस्त दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि ये एक बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है और इससे बच्चे जो है सीखते भी हैं और इनके पास बहुत सारा नॉलेज भी आता है, एंड दे कैन आल्सो रिटेन द दैट नॉलेज। और द थर्ड थिंग इज दैट आप उनके साथ बैठ के जब इस तरह बातचीत करते हैं तो आपका टाइम भी अच्छा गुजरता है, यू मेक कनेक्शंस और यू मेक योर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, plenty of benefits instead of wasting your time on small screens, just on social media and other things. आप लोगों को ये पसंद आया? ये एक्टिविटी अच्छा है ना? Yeah? We read another book, Which one? The Chocolate Factory. You covered many books, man. So we will also read another book today. तो दोस्तों ये थी आज की एक्टिविटी। ये जस्ट आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए कि आप अपने घरों में अपने बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात हम सब शिकायत कर रहे होते हैं कि आजकल जो है लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं या सोशल मीडिया की वजह से उनकी लाइफ जो है ना नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों की लाइफ पे या हमारी लाइफ पे।
तो आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में ला सकते हैं और अपने बच्चों के साथ एक मीनिंगफुल और फ्रूटफुल एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं और अपने छुट्टियों को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये दिसंबर का आखिरी महीना और आखिरी हफ्ता चल रहा है। 2024 को हम एक बेहतरीन अंदाज से क्लोज करने जा रहे हैं। अपने और अपने दोस्तों का, अपने सराउंडिंग में रहने वाले लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।